Hello all, this is Monica this side. Welcome back again. Hope you all are doing good. Just let us wait for a few more minutes for the few people to join in, then we will start with our Verli on oil pastel drawing. These are the few drawings जो मैंने थोड़ी दिनों पहले ही बनाई थी. So just wait for two more minutes and then we will start. Okay, I think it's the time to begin. So this is the oil pastel drawing जो मैंने बनाई है. इसके ऊपर मैंने वर्ली playing the music and this is the वर्ली के oil coasters जो मैंने कलर किए हैं. These are the few designs of the वर्लीज. आप सब जानते होंगे वर्ली इज़ अ फोक आर्ट ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम द सह्याद्री रेंज. सो ये कुछ कोस्टर्स मैंने बनाए थे वर्ली की थीम पे. हेलो विनीता जी, दिस आर फ्यू कोस्टर्स जो मैंने वर्ली थीम को दिमाग में रखते. मेरा मोटिव था वर्ली पेंटिंग, वर्ली ड्राइंग ऑन द कोस्टर्स एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल ऑन योर डाइनिंग टेबल. बहुत सुंदर लगता है इफ यू कीप इट ऑन. हेलो महक जी, वेलकम बैक. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन फॉर माई लाइव सेशन. एंड आज हम इस टाइप का ड्राइंग सीखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस विद द थिंग्स विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर आवर दिस टाइप ऑफ फॉर्म. अ नॉर्मल ड्राइंग शीट और ड्राइंग पेपर वॉट एवर यू आर हैविंग राइट नाउ एट होम. और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है क्योंकि बिकॉज ऑफ टाइम हम कवर नहीं कर पाएंगे. सो ट्राई टू इफ़ यू आर यूजिंग दिस ऐसी बड़ी आपके पास ड्राइंग बुक है तो यू कैन टेक द हाफ ऑफ द पेज, जस्ट कट इट डाउन हाफ into half and yes you can use this. If you are having a small drawing book it's perfectly fine. The second material which will be requiring is the normal tape. You can use doctor tape, mask tape, cello tape if you are not having any of the two. The third material is the oil pastels. ये 50 शेड्स वाला ऑयल पेस्टल्स है कैमल का. इसमें फैब्रिका का भी फेबर कैसल का भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं. ये मैं कैमल का यूज़ करूँगी अलॉन्ग विद दिस. हेलो ज्योति जी, दिस इज़ अ टिश्यू पेपर. जस्ट कीप इट हैंडी. आपके ड्राइंग में कुछ कलर्स या कुछ मेसीनेस होता है तो जस्ट टू क्लीन अप. एंड दिस इज़ अ सीजर विच विल बी रिक्वायरिंग टुडे. सो लेट अस बिगिन विथ आवर ऑनलाइन सेशन. थैंक यू महक जी. हेलो बबीता जी, हेलो ज्योति जी. सो द फर्स्ट पार्ट, अगर आपने मेरा लास्ट ऑयल पेस्टल वाला सेशन अटेंड किया होगा तो हमने वर्टिकल ड्राइंग ली थी. टुडे वी विल बी टेकिंग अवर पेपर इन द लैंडस्केप मोड और यू कैन से इन द हॉरिजेंटल मोड. The first thing is to secure your no, I'm not live on the YouTube. I will be live here only at the Mahi Artifacts page only. So just secure your border with the tape, whatever tape you are having right now, it's perfectly fine. Just secure your border with the tape from all the four sides. But yes, you can watch the same video later on, maybe by evening, on my YouTube channel Malhar Art and Craft. All my live sessions are there, and do subscribe to my YouTube channel Malhar Art and Craft for my all upcoming sessions, live sessions. But hello Anjali, good to see you back. अच्छा लगता है फिर से वही चेहरे देखना. इट्स सो गुड टू सी द सेम फेसेस अगेन अटेंडिंग माई सेशंस. सो
ये हम लोगों ने हमारा बॉर्डर सिक्योर कर लिया है एंड वी विल स्टार्ट विद द ऑयल पेस्टल्स। इसमें मैंने पिंक के शेड्स लिए हैं। फॉर दिस ड्राइंग आई यूज़ द पिंक का शेड। फॉर दिस वन आई विल जस्ट गो विथ रेड ऑरेंज। आई सपोज द सेम शेड वी विल बी टेकिंग एज ऑफ दिस कोस्टर्स। ये कोस्टर्स, ये कोस्टर्स ऑयल पेस्टल नहीं यूज़ किए गए। I had used acrylic colors for this coasters. So I'll be taking the 4 shades. If you're not having 4, you can just choose any 3 shades of the same combination. Hello Rishali, hello Rekha ji. So the 4 shades I'm using is the primary red, normal primary red. The second shade I'm using is a normal orange, 283. The third I'm using is a medium yellow, 256 number, and the last one I will be using is the lemon yellow, 236. Yes, you can use any tape, Rekha ji. If you're not having the masking tape, you can use the cello tape, or you can use the doctor tape. Man, your way of teaching is very good. That's why. Okay, so sweet. Thank you, Mehak ji. Thank you very much for your kind words, for your lovely words. Thank you. So let us begin with the oil pastels. आपको आपके पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है सिंस वी आर यूजिंग 4 कलर्स. इफ यू आर यूजिंग 3 कलर्स, जस्ट डिवाइड योर पेपर इनटू द 3 पार्ट्स. आई एम यूजिंग द 4 कलर्स, सो आई विल जस्ट डिवाइड माई पेपर इनटू 4 पार्ट्स, स्टार्टिंग विद द primary red at the top. I am using the primary red color at the top. Thank you Ishrat ji, so nice to see you. Okay, the colors which I am using today is the red, the primary red, the normal orange, lemon yellow and medium yellow. I repeat, primary red, lemon yellow, medium yellow and the orange. And always remember to go into only one direction. Don't go into the slanting or don't go into the vertical direction, since this is the landscape we are doing today. So just move your hand from left to right. Okay, Deepa ji, one more time. Okay, fine. The primary red, normal red color at the top. The second is orange, the normal orange. Then the medium yellow and the lemon yellow. These are the four colors we are using today for our Varli. And Varli is a very simple art, though it looks difficult. Just you have to remember one thing कि कोई भी चीज़ शुरू करने के पहले बस अपने दिमाग में ये सेट कर लेना है कि yes, it's easy and I can do it. And next is the medium yellow. I am using right now the third shade, medium yellow. Just let me know if I am going too fast. I will slow my speed. But since we have to draw the figure on this Varli, and the last is the lemon yellow. And please friends, do like my page Mahi Artifacts, subscribe to my YouTube channel Malhar Art and Craft, and please share this video among your friends who are very keen to learn Varli art. Okay, fine Mayank ji, it's okay. I will slow down my speed. Just overlap few shades on each other so that it becomes easy while smudging. Hello Megha ji, hello Deepa ji.
just overlap any two shades like this, so that while smudging it blends very easily and it looks beautiful. Hello Alpana ji, hello Alpana ji. And the next thing which we'll be using is the normal tissue roll, or then if you're not having tissue roll, tissue paper, kitchen tissue, anything you can use. Just tear a bit of paper, fold it multiple times like this, and always remember to start from the lightest portion to the darkest one. Always start from lightest to dark. So I am starting with this lemon yellow, and आपने जो आपके कलर किया है वो हॉरिजेंटली किया है into the landscape, so you have to use the same way for smudging like this. See the difference? See the difference? Hello Sonia ji, hello Shishma ji. Please tell the color's name again. Okay, this is the red, the primary red. The second shade is a normal orange. The third is a medium yellow, and the last one is a lemon yellow. ऋशाली जी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, मैंने तो नॉर्मल ड्राइंग शीट जो मेरी ड्राइंग बुक थी वो यूज़ किया है. ये ड्राइंग बुक थी मेरे पास, उसी को मैंने हाफ में लिया है, दैट्स इट. बट एक बार आप कंफर्टेबल हैं तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. थोड़ा सा इसकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए आपके पेपर के, दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट. आप नॉर्मल जिसमें प्रिंट करवाते हैं पेपर्स वो बहुत पतले हो जाते हैं, सो यू कांट यूज़ दैट थिंग. हेलो स्मिता, सो नाइस टू सी यू. हेलो शिव कुमार जी. होप्स आई एम नॉट गेटिंग टू फास्ट, जस्ट लेट मी नो. I'll slow down my speed and write your queries in the chat box. I'm always ready to share my little knowledge with you. I'm there with you. And do subscribe to my channel, YouTube channel. The same video will be there on my page Mahi Artifacts, and again it will be there on my YouTube channel Malhar Art and Craft. Yes, you can take A4 sheets मिथिला जी, but I think आप मेरे साथ नहीं चल पाएंगे क्योंकि A4 शीट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा and it will take time, and most of the people नहीं प्रीफर करते बहुत लॉन्ग सेशंस, इसलिए मैंने छोटा पेपर लिया. Once you are comfortable with your this oil pastels and Varley, yes you can practice on A4 sheet or A3 sheet. यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वाइट पोर्शन दिख रहा है, इसलिए मैं रेड का फिर से यूज़ कर रही हूँ. The colors which I am using right now, Charumati ji, are the oil pastels. Oil pastels from Camel. Let me show you. This is the oil pastels from Camel. नॉर्मल क्रेयॉन्स आप नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज वो स्मच नहीं होते हैं. नॉर्मल क्रेयॉन्स आर यूज जस्ट फॉर द कलरिंग. ये ऑयल पेस्टल स्मच हो जाते हैं इजीली. एक बार आप उस पर टिश्यू रब करते हैं तो इट गेट्स स्मच वेरी इजीली, एंड आपको एंड में जो दिखता है, जो लुक आता है इसका बहुत अच्छा लगता है. जस्ट लेट मी क्लीन इट अप. आई थिंक सम रेड, I'll apply more red over here. नीचे का white portion it's coming out, so I will just apply a few red and smudge it again. This is, ये हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया. Now we will start with our वर्ली. वर्ली के ट्यूटोरियल, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल मल्हार आर्ट एंड क्राफ्ट में मिल जाएंगे. सो इफ़ यू वांट टू लर्न द स्टेप बाय स्टेप ऑफ आवर वर्ली आर्ट, यू कैन
सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मल्हार आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसमें काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको रिलेटेड टू वर्ली। उसमें एनिमल्स, प्लांट्स, फिगर्स, ह्यूमन फिगर्स, बर्ड्स, हाउ टू मेक द बॉर्डर्स, वो सारे डिस्क्रिप्शन स्टेप बाय स्टेप है। सो हेलो शीतल जी, हेलो बेली जी। सो लेट अस बिगिन विथ अवर वर्ली। जैसे इसमें आपको दिख रहा है मैंने 5 फिगर्स ड्रॉ किए हैं। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सेंटर वन एंड इट्स अप टू यू कि आपको इनके अंदर जो फिगर दिख रहा है उसके अंदर यू जस्ट हैव टू कलर विद अ ब्लैक पेंसिल और यू हैव टू यूज एनी पैटर्न फॉर इट। मल्हार आर्ट, यस मिथिला जी, इट्स मल्हार आर्ट एंड क्राफ्ट, मल्हार आर्ट एंड क्राफ्ट। थैंक यू रेविका जी। सो दिस इज द लैंडस्केप पेपर जिसमें हम लोगों ने ऑयल पेस्टल स्मर्च कर लिया, ब्लेंड कर लिया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द वर्ली पार्ट। लेट अस बिगिन। मेरे जो पेपर है उसका दिस इज अ सेंटर, ऊपर एंड नीचे आपको इक्वल प्रपोर्शन में छोड़ना है। दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन। सो फॉर फिगर you always have to remember that you have to draw 2 triangles. Hello Sonali ji. Okay, so this is the first triangle. It depends upon the size of your paper and how big your paper is. उस हिसाब से आपके फिगर्स बड़े होंगे। इफ़ यू आर यूजिंग द स्मॉल साइज पेपर, आपके फिगर्स का साइज भी छोटा होगा। दिस इज द 2 triangle you can say, or a cross with 2 slipping line. This is a neck portion and उनका face. Okay, I will prefer the pattern for this picture. It's fine if you want to just color the whole figure, it's perfectly fine, it's up to you. जैसे इसमें मैंने पूरा ब्लैक कलर किया है। सो इफ़ यू वांट टू डू इट लाइक दिस, यस यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो, वरना आज हम पैटर्न वाला सीखेंगे। यू कैन यूज योर इमेजिनेशंस, बट वर्ली आर्ट इज बेसिकली अ सर्कल, ट्रायंगल एंड अ स्क्वायर। सर्कल उन्होंने लिया फ्रॉम द सन एंड द मून। Sorry, which pencil? Okay, sorry, I forgot to describe this. Give the description of the pencil. Okay, the pencil I am using right now is 10B. It's 10B. No, this is not the normal pencil, मेघा जी। ये अलग dark pencil आती है। This is 10B. If you are not having 10B, you can use 8B also. मनीषा जी, मैं प्रीफर करती हूँ सेंटर से स्टार्ट करना, बिकॉज सिंस वी आर ड्राइंग दिस टुडे, तो इसमें 5 फिगर्स है। सो आई विल स्टार्ट विद दिस पोर्शन फर्स्ट एंड देन आई विल मूव ईदर ऑफ माई साइड। हेलो प्रियंका, दिस इज नॉर्मल पेंसिल। नो मेघा जी, विच पेंसिल आई एम यूजिंग? द 10B pencil right now, and I am just making a pattern. You can make whatever pattern you want, you like, it's perfectly fine. And I am on the background. You did oil pastel. Yes रश्मि जी, आप शायद लेट ज्वाइन हुई हैं। हम लोगों ने बैकग्राउंड में ऑयल पेस्टल यूज़ किए हैं, रेड, ऑरेंज, मीडियम येलो एंड लेमन येलो, and something like this. You can draw as per your imagination, as per your creativity. And do subscribe to my YouTube channel, please. Please share this video. And yes, for my upcoming session हम लोगों ने पोल रखा है। The options you are having to select is you can again choose Worli Art or Zentangle or Dreamcatcher again or Decoupage on bottle. So depending upon the votes
We will be selecting, ma'am please zoom wherever you feel the figure. Okay, fine. इसको थोड़ा सा zoom कर लेना. Fine. And these are the legs of my Varli, and it is holding an instrument. So this is the hands. Hands are just like a normal stick. Name of your YouTube channel, रश्मि जी मेरे YouTube channel का नाम है मल्हार Art and Craft. It's Malhar Art and Craft. After the session, I will definitely answer all your queries. I will write down the exact name along with the link. I will share the link with you. And this is the Varli, which is playing an instrument, musical instrument. And for step-by-step tutorial for this Varli, you can go to my YouTube channel, Malhar Art and Craft, जिसमें around, I'm not sure, but 8 to 10 videos are there, जिसमें हम लोगों ने description दिया है step by step. For other pencil where you color the whole body in the black is the same. Yes, it's the same 10B pencil, Shraddha ji. Do you want to zoom more? Is it fine now? Is it fine? Hope so it's clear now. Okay, this is the one figure. And the thing is, if you want to, ये मैंने अभी since पूरा portion cover होने के बाद आप देखेंगे कि it's looking like a man. If you want to draw a woman, just you need to add a bun over here, and it will become a woman. Like this. Okay. Just let me know in the chat box if you're having any queries. I'll try to sort out all your queries. Okay. Next, we will begin with our next figure. Since it is playing a different kind of instrument, it is bended slightly towards right hand side. So for this time, यहाँ पे मैंने directly cross लेके slipping line डाली थी दो. But for the next figure, हम लोग को थोड़ा सा change करना है. I will draw first a tilted, थोड़ा सा tilted triangle like this, and a straight triangle like this. Okay. Hope so I am very much clear to all of you. And yes, Varli takes time to learn, so for learning step by step, you can visit to my YouTube channel, जिस पे मैंने already step by step tutorial. Can we draw this on? This is a type of canvas only जो मैंने use किया है. इस पे base coat मैंने acrylic का दिया है, and I use the black acrylic color for this. So I think yes, I have never tried actually on acrylic. मैंने MDF coasters वगैरह workout किए हैं काफ़ी सारे. Yes, you can do watercolor base, and yes, you can do the Varli on it. Yes, sure. Thank you, Mithila ji. Thank you very much. So we will begin with the filling part of our figure. I will again love to make it a woman. So this is the woman, and here comes the filling part. You can feel as per your creativity. It's perfectly fine. No need of copying same as it is. This I would like to color it from here. One more shade over here. Hope you are enjoying the session. Yeah, and this is one more bookmark which I have made using the same Varli art. This is MDF bookmark, and ये coasters हैं, MDF coasters. The same Varli over here also. The same pattern, the same Varli. But since today our theme is Varlis on the musical instruments, so
ये सब आपको अगर डिटेल में लर्न करना है तो यू कैन विजिट माई चैनल, माई यूट्यूब चैनल मल्हार आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मिल जाएंगे हाउ टू learn the from the basic, from the beginning, from the small rectangle, how to make a triangle, how to make a circle. Everything is there on my YouTube channel, so it will be easier for you to learn from there if you are facing any problem right now. And we are just about to done the second figure. And please friends, do like my page Mahi Artifacts and stay tuned on my page for my upcoming events. And yes, my upcoming events is on Zentangle. Not tomorrow because of my personal commitment, I won't be able to come tomorrow. And also Rakhi is there. Which pencil you use? Charuji, I am using 10B pencil. I am using 10B pencil. Okay, just show them the bookmark now. Zoom out. And this is playing something different instrument. So we'll draw like this. This is the other type of instrument. I don't know the name, sorry. And then comes the filling part. And here you go for the filling part. If you don't want to feel the figure like this, you can just color your whole Varli like this, the total black, both the triangles, the total black. You can do it like this also if you're not comfortable with this filling part, but I just love this filling part, filling the patterns in my Varlis. It looks very beautiful. And the two hands holding the instrument like this, and the legs like this. So, and bow something near the intersecting point so as to show it as a bow. Thank you Bijal ji. Hello ma. Thank you mama. Hello Nayan ji. So let us begin with our third figure. The third figure is a normal standing and playing one more instrument. So just I'll pen down the same cross with two slipping line, a neck and a round face like this. I'll just color my whole round face with the same pencil, yes of course, with the same pencil. And I'll start filling the figure. If you are having any queries, yes, you can write down in the chat box. I'll try to answer all your queries. Maybe not right now, but later on, sure. Okay, Rashmi ji will definitely plan, but right now the next session is on Wednesday, I suppose. Today is Sunday, Tuesday. It's on Tuesday. We are coming back live Tuesday for this Zentangle art this time. And yes, surely we will plan for this tea coaster also. Stay tuned on my page. You will get an update from Mahi Artifacts. Okay, Saira ji, no issues. No issues, Saira ji. Perfectly fine with me. Thank you, Neha ji. Thank you, Manisha ji. Thank you, Dipali ji. Thank you very much for all your love and support. And this is the one which is playing another instrument, holding a stick for a band. And the legs and the
Thank you so much. Tuesday what time? Tuesday Neha ji, the same time, the same place, same time, same place. Tomorrow, because of this Raksha Bandhan and my personal commitment, I won't be able to come tomorrow, but surely we're gonna meet Wednesday, same time, same session, same page, on my page Mahi Artifacts. If you're finding any difficulty for this worldly art, you can later on go to my YouTube channel Malhar Art and Craft. Thank you Pallavi ji, thank you very much. रश्मि जी, वैसे तो अल्टरनेट डे आते हैं, बट हम कल नहीं आ रहे थे. yesterday only we took a session on origami for kids and I won't be able to come on Monday, so आज मैंने सेशन रखा है. And again I'll be coming live as much as I can. I'm trying to come live as much as I can. Just a bit of, okay, these are the 3 figures. Now we'll move on to our left hand side. The same with the tilted, this time on the left hand side. Okay, fine. Like this and like this. A normal, looking very nice. Thank you Jyoti ji. I too love folk art, Bharti ji. Thank you Rashmi ji. Thank you Deepa ji. Thank you Jyoti ji. And the neck, the circle portion, the face, just color the whole face with the same HB pencil, sorry, same 10B pencil. Yes, this video will be there on my page Mahi Artifacts and later on in the evening on my YouTube channel Malhar Art and Craft. To learn the step by step tutorial Mahi Malhar Art and Craft पे already हम लोगों ने ये वीडियोस अपलोड किया है वर्ली का, so you can go and view on my YouTube channel also. And for this making pattern, you can use your imagination. Just do it like this. Actually, maybe नो इश्यूज़ नेहा जी, ये वीडियो माही आर्टिफैक्ट्स पे अपलोडेड रहेगा, प्लस मेरे यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो रहेगा. एंड प्रीवियसली भी जो हमारे वीडियोस हुए हैं वो भी मेरे माही आर्टिफैक्ट्स पेज पे ऑलरेडी हैं. सो यू कैन जस्ट गो टू माई यूट्यूब चैनल मल्हार आर्ट एंड क्राफ्ट. वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू सोनाली. विच पेंसिल भारती जी? दिस इज 10B पेंसिल I am using right now, the 10B pencil, Apsara का 10B pencil. Yeah, 10B. That's very good Sonali, that's very good if you are learning yourself and then letting your kids understand how to do it. And this is the different kind of instrument which this lady is playing with. I actually really don't know, sorry, the name of the instruments they are playing, sorry for that. And I will just color this instrument and this portion also, something like this, and I will just fill out my figure, Varli figure. And like this. Mehak ji, I am not sure because black marker, permanent marker, I think yes you can use on oil pastels. I am not sure. Definitely Mehak ji मैं खुद try करूँगी and I will let you know. Sorry for that. Extremely sorry. Sorry. Thank you Bharti ji. Just fill any type of pattern you want into a Varli figure.
please show full drawing. Okay, zoom out. Once we complete this session, आपको पूरी ड्राइंग देखने मिल जाएगी. प्लस सेम वीडियो will be there on my the same video will be there on my YouTube channel Malhar Art and Craft. It will be there on my Mahi Artifact page also, so you can view it from there also. And these are the hands holding the instrument. If any mistake we can rub it. कर सकते हैं, but you have to be very careful. We'll try this also. Just let me finish this whole part and हम लोग एक छोटी सी mistake try करके देखेंगे and how to not exactly, not perfectly, but yes, we will try. And the last figure is playing a drum. Okay, yes, the last figure is the figure which is playing a drum. For this, first you have to make a drum like this over here. To make a drum like this. Charumati ji, for that please visit my YouTube channel Malhar Art and Craft. आपको step by step मिल जाएगा कि how to make a kids in Varli art, how to make a girl in Varli art, how to make a birds, animals, huts. Everything is there on my YouTube channel Malhar Art and Craft. Thank you, Smita. Hello, Shivangi ji. So the next part is the figure. Oops. Okay, no issues. Fine. You're done. And overly playing a drum. How should I color it? Okay. Let me sharpen my pencil. It's getting blunt. Just fill it like this, and I will color the alternate triangles like this. If you are having any queries, just write it down. And we are having our next session lined up, that is a Zentangle art, day after tomorrow on the same time on the same page. Hope to see you all there again. One more. The same pattern I will be following. The same coloring the alternate triangles. Yes, Arshi ji, I would love to see your work. I would just love to see your work. Just post your work on my group Malhar Art and Craft. Please, it's a request to all of you, just post your work, whatever you have learned today through this session. Just post it on my group, FP group Malhar Art and Craft. After this session, I will let you know the details, share. And this and this, yeah. Yes, Rashmi ji, after applying the oil pastels, आपको tissues, या if you're not having a tissue, you can use a cotton roll also. कॉटन रोल से आपको मर्ज करना है, स्मर्ज करना है, बोल सकते हैं ब्लेंड करना है. अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो you can view it later on my YouTube channel Malhar Art and Craft. The same video will be there along with the explanation, whatever I am giving right now, with no editing. The same video as it is. This is the face and the legs.
Yes, for step-by-step tutorial you can visit my YouTube channel Malhar Art and Craft. And yes, if you want to make sun over here, you can just go with the making of sun, making of birds. It's up to your imagination. This is a sun I am making right now. Like this. A normal spiral. And along with that, a small triangles. Like this. And yes, वर्लीज में varieties of borders होते हैं. You can go and watch it on my YouTube channel Malhar Art and Craft for the different types of borders. For this I will just show you the border on this one side. Later on you can just complete it, the whole drawing, and post it on my group Malhar Art and Craft. I would just love to see your art, see your work. You can use various types of border. It's there on my Malhar Art and Craft YouTube channel. Any type of border, it's there. I'll just show you this border, and you can later on complete the remaining 3 portion if you are drawing along with me. And I will really love to have a look at your work. पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपना वर्क मल्हार आर्ट एंड क्राफ्ट फेसबुक ग्रुप पे शेयर करेंगे. दिस इज़ द बॉर्डर आई एम मेकिंग राइट नाउ. सेम बॉर्डर आपको बाकी की 3 साइड्स भी बनानी है. आई एम जस्ट मेकिंग इट ऑन द वन साइड. आई एम जस्ट मेकिंग इट ऑन द वन साइड. यू कैन लेटर cover on the remaining 3 sides. And for any queries, just feel free, just drop down your message in the chat box. This is it. This is the border which you can cover from all the remaining 3 sides, and just remove the tape. Carefully, just be very careful by removing the tape. This, you are just done. Just about to end. So how is it looking, guys? Please let me know. Thank you Rashmi ji, thank you very much Sonali ji, thank you Anita ji, thank you Ashwini ji, and thank you for being with me. Thank you for there. And just a request, do share this video. Mahi ji, please. Neha ji, sorry I'm not getting your query. Only with pencil, no pen work. No pen work निमिषा जी. Only with pencil and the oil pastels हम लोग ने ये drawing finish की है. What tape is it, ma'am? It is a masking tape, ma'am. It is a masking tape जो हम लोगों ने अभी यूज़ किया. This is the masking tape. आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप पे masking tape मिल जाएगी. Thank you प्रीशा जी. यस प्रीशा जी, ये सेम वीडियो विदाउट एडिटिंग मेरे माही आर्टिफैक्ट्स पेज पे रहेगा, प्लस ये मेरे यूट्यूब चैनल मल्हार आर्ट एंड क्राफ्ट पे भी रहेगा. नॉट राइट नाउ, मे बी आफ्टर एन आवर वी विल बी अपलोडिंग, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मिल जाएंगे वर्ली के रिगार्डिंग द हर्ट्स, हाउ टू ड्रॉ द हर्ट्स इन वर्ली, ह्यूमन फिगर, प्लांट्स, एनिमल्स, बॉर्डर्स. Various videos are there uploaded already. Thank you Bharati ji, thank you Chandni ji. I'm making along with you. So nice. Please Sonali ji, please upload your work on my FB group Malhar Art and Craft. तनु जी, मेरा वीडियो आपको मल्हार आर्ट एंड क्राफ्ट यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, प्लस माही आर्टिफैक्ट्स पेज पे भी रहेगा ये वीडियो.
Awesome work. Thank you, Rashmi ji. Thanks a lot. How to join your? Just send a request, Neha ji. Just send a request. मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी आफ्टर द completion of this session. I'll just send you the link where to upload the work and how to join the group. Thank you, Deepa ji, and thank you very much. Thank you all of you for being there. And please subscribe to my YouTube channel Malhar Art and Craft. Do like my page Mahi Artifacts, and please अपना वर्क अपलोड करें मेरे मल्हार आर्ट एंड क्राफ्ट FB ग्रुप पे. एंड वन मोर थिंग, हम लोगों ने वोटिंग रखी है, पोल रखा है इस बार कि आफ्टर दिस एंटेंगल सेशन दैट इज़ ऑन ट्यूसडे विच वी शेड्यूल्ड ऑन ट्यूसडे, आपको अपार्ट फ्रॉम जेंटेंगल कौन सा आर्ट फॉर्म आपको चाहिए. उसमें मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं. द ड्रीम कैचर, वर्ली अगेन, yes we can try Varli on coasters the next time. Then decoupage on bottle is there and Zentangle is there. So just जिसको भी ज़्यादा वोट मिलेंगे I will be live again with that session. Thank you चारू जी, thank you नेहा जी. सोनाली जी, it's okay, it takes time. No one is perfect, not even me. Thank you गोल्डी जी, thank you चारू जी, थैंक यू वीरा जी. अश्विनी जी, मैं आपको डिटेल्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेशन इसी वीडियो के नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, हाउ टू ज्वाइन एंड हाउ टू अपलोड योर वर्क. अलॉन्ग विद दैट मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी मिल जाएगा आपको. थैंक यू. प्लीज शो कोस्टर्स. कोस्टर्स आर ऑलरेडी देयर डियर, इट्स ऑलरेडी देयर अलॉन्ग विद द स्टैंड. इट कम्स अलॉन्ग विद द स्टैंड लाइक दिस. These are the 4 coaster set जो मैंने वर्ली के थीम पे बनाए हैं. I want अल्पना जी, मैं आपको yes you can ping me personally अल्पना जी for the coasters. You can ping me personally. Thank you मयंक जी. Hello शिल्पा दी, you are late. Mayank ji, I will just love to see your work. Just upload your work on my FB group Malhar Art and Craft. Thank you Rashmi ji. Thank you very much. Thank you all of you. Thank you for being there. Thank you.